fellow student. Today I'm going to teach you about the different software measures, metrics, and measurements. Generally, when we talk about the measures, metric, and measurements, we do not differentiate them distinctly in our day-to-day life. We consider that the measures, metrics, and the measurements are all the same things, and they can be used for the taking the same reference. But interestingly, there is a difference among them. And I shall explain you that what are these differences. First of all, a measure provides a quantitative indication of the extent and dimension, size, capacity, efficiency, productivity, and reliability of some attribute of a product or process. तो अगर हमें किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस को मेजर करना है उसकी कितना उसका कैपेसिटी है या उसकी एफिशिएंसी है तो उसको मेजर कहते हैं. जैसे अगर किसी का बोला जाए मेजरमेंट होता है तो अगर हम लोग किसी कपड़े के मेजरमेंट वी मेजर इन इट्स मीटर, बट अगर हम किसी गैलन की बात करें तो हम उसको लीटर में नापते हैं. तो डिफरेंट मेजर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स एंड बट सब चीज़ों में ये साइज के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ. देयर कैन बी एफिशिएंसी ऑल्सो. तो अगर हम मशीन की फोटोकॉपी मशीन की बात करें तो नंबर ऑफ पेजेस फोटोकॉपी पर यूनिट पर मिनट होता है. लेकिन अगर हम बात करें कि एक गाड़ी है उसके रोटेशन की बात करें तो रोटेशन पर मिनट होता है. तो डिफरेंट चीज़ों को हम लोग मेजर करने के लिए डिफरेंट क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज करते हैं एंड इन क्वांटिटेटिव मेजर्स में हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को मार्क करते हैं. In measures, through these measures, we can measure the quantity or compare the quantity of the two elements. Or measurement is the act of evaluating a measure. In the process of measuring something is called the measurement. Suppose there is a length of clothes, and if you find out the length of the clothes using the meters, then this process is called the measurement of the clothes. Likewise, if you measure the volume of the oil in a tanker, then you are measuring the volume of the oil in the tanker. So measurement is the process and measure is the quantitative calculation of the amount of the particular things. A metric is a quantitative measure of the degree to which a system, component, or the process possesses a given attribute. The metric is a quantitative measurement of the degree to which a system or component or process possesses a given attributes. Suppose, for example, when a single data point has been collected, the number of errors uncovered in the review of a single module, a measure has been established. Suppose आप मान लीजिए कि अगर एक सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं तो उसमें हो सकता है कि 5 मॉड्यूल्स हैं. तो मॉड्यूल 1 में आपके 20 एरर्स आए, मॉड्यूल 2 में एक भी एरर नहीं आया, मॉड्यूल 3 में 30, मॉड्यूल 4 में 40 और मॉड्यूल 5 में 10 मेजर्स आए, 10 एरर्स आए. 1 में 20, सेकंड में 0, थर्ड में 30, फोर्थ में 40, फिफ्थ में 10. So overall, if we calculate the total number of the one in the program in the project, as project was there were 5 modules in the project, so total number of error would be equals to 100, and on average a number of error per unit module will be equals to 100 divided by number of module, which is here is equal to 5, to 100 upon 5, and that would become equals to 20. So this is called the metric, that the average number of error in the software modules are 20. So as per definition, I can say that when a single data point has been collected, example, the number of error uncovered in review of a single module, a measure has been established. Means if you are measuring the number of error in a particular module, then you are measuring the error. Measure a quantitative measure, it's the number of error here in this module. If you are checking a single module, single data point, then that is the number of error in the module. Measurement occur as a result of the collection of one or more data point, and measurement occur as the result of the one or more data point, a number of modules.
A software metric relates the individual measure in some way, measures in some way. तो सॉफ्टवेयर मेजर मेट्रिक क्या होता है जिसके थ्रू हम लोग इंडिविजुअल मेजर्स को आपस में रिलेट करते हैं. जैसे कि अगर हम लोग there were 5 different module and we are calculating the number of error in each module. That was in first module there were 20 errors, in second there were no error, third 30, fourth 40, and fifth 10. So we can say that their modules are modules are considered independent, but these were the measurement of the number of error. And now when we calculate the average number of the faults per unit module, then it is somehow all these modules are, we are calculating the metrics because all these modules are related to a single project. So this would be equals to, this will be called as metrics. So why a metric relates the individual manner in somehow some way. So here we are calculating the total average number of error by calculating the number of error per unit in total number of modules, every module, each module. Next thing is software process and product metrics. Software metrics are used to quantitatively characterize different aspects of the software process or software product. So process metric quantifies the attribute of software development process and environment. There are two types of metrics, software metrics and product metrics. Software metric measures the quantitative characteristic of different aspects of software product. Means software metrics will be related with the software product जो quantitative characteristic है. And process metrics क्या होंगे, will quantify the attribute of software development process and environment. तो जो सॉफ्टवेयर उसमें होता है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स आर मेजर फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑफ. जब हम प्रोसेस मैट्रिक की बात करें तो उसमें होता है आपका प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, फेलियर रेट, एफिशिएंसी. एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स आर साइज, रिलायबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शनैलिटी. तो अगर किसी सॉफ्टवेयर को आप मेजर कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट मैट्रिक याद करने की बात नहीं है, उसको आप लोग मेजर करते हैं लाइन ऑफ कोड्स में. तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का साइज जो होगा वो उसके नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड से मेजर कर सकते हैं. उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को या उस एल्गो को रन होने में कितना टाइम, मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम लगता है, एवरेज टाइम लगता है. फिर रिलायबिलिटी होती है कि उस सॉफ्टवेयर में कितने नंबर ऑफ एरर पर एग्जीक्यूशन आते हैं, तो उस प्रोडक्ट की कितनी रिलायबिलिटी है. और उसमें फंक्शनैलिटी, हाउ मेनी फंक्शनैलिटी डज द प्रोजेक्ट हैव. If a product will have higher number of complex functionality, then it will be considered as a complex project in comparison to the project which is having the less number of functionality. And if we are talking about the process metrics, तो process metrics क्या होगा, process metrics में हम लोग अपने process को देखेंगे कि quality in big company try to satisfy to improve or certify their software process. So the metrics used for deciding that at which level the company you will I shall tell you about the CMM level, capability maturity model. The capability maturity model is a standard or for that is defined that is given to a company, and on the basis of the level they lie, they get the number of projects. So how in this, the CMM is the process metrics, and the metrics in this metrics, the parameters are the productivity, quality, failure rate, and efficiency. So these are the metrics, and every company try very hard to get this higher CMM level, and they must ensure that their software development process is much productive, means they deliver the project, and quality means their project should be satisfy and should not be create any error or should not unpredictable ambiguous state. Failure rate means software should have least number of error, and it should not
give surprises when it runs. And efficiency means it should be fast one, and if it is faster than process metrics, so on the parameter of these companies software development process is measured, and with company with higher metrics value of the on this criteria get the higher CMM level. So every company tries their best to get these in terms of product as well as in terms of the process also. Productivity is defined as the rate of the output. कोई भी चीज आपकी कितनी बन रही है पर यूनिट टाइम में, तो वो उसका प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। और प्रोडक्शन पर यूनिट एफर्ट, कि यूनिट एफर्ट से आप उसमें कितना एक यूनिट बनाने में आपको कितना एफर्ट पड़ रहा है। द आउटपुट अचीव विथ रिगार्ड टू टाइम टेकन बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड। तो प्रोडक्टिविटी में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये उसमें कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बस टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि आप एक यूनिट को जनरेट करने में कितना टाइम ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर प्रोडक्टिविटी, अगर मान लीजिए एक न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है और एक मैगजीन पब्लिश हो रही है, तो मैगजीन को जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस होते हैं तो एक मैगजीन को पब्लिश करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप मान लीजिए एक मशीन, दो मशीन्स लेते हैं, एक मशीन है पेपर में, क्या है पेपर में मान लीजिए आप 7-10 पेज होंगे, 10 से 12 पेज, और मैगजीन होती है उसके अंदर आपके अराउंड 100 पेज है। मान लीजिए एक में मान लीजिए पेपर में 10 पेजेस हैं और मैगजीन में 100 पेजेस हैं। तो हमारी अगर एक मशीन लगाएं जो 2 मिनट में एक पेज पब्लिश करती है, मान लीजिए सपोज 2 मिनट में 2 सेकंड में एक पेज पब्लिश करती है, और एक मशीन है कि जो 1 सेकंड में एक पेज पब्लिश करती है। जो हम न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं वो 10 पेज का है और वो मशीन 2 सेकंड में एक पेज पब्लिश करती है, लेकिन जो मैगजीन पब्लिश कर रहे हैं वो 1 सेकंड में एक पब्लिश करती है, तो हमें 1 सेकंड में एक पेज प्रिंट करती है। तो अगर हम टर्म्स में बात करें प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में, तो पेपर की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप न्यूज़पेपर के टर्म से बात करें तो पेपर को जो उसका है 10 बाई, एक पेज को 10 क्रॉस 2 हो जाएगा, तो 1 सेकंड 10 पेज उसका है, तो सॉरी 10/2, 5 सेकंड में एक पेपर पब्लिश होगा। 5 इन ईच 5 सेकंड 1 पेपर इज इक्वल टू 5 सेकंड में एक पब्लिश होगा। तो इन 1 मिनट 12 पेपर विल बी पब्लिश्ड। So similarly for the magazine which is of 100 page, it will take 100 seconds, and it 100 second मतलब 1.5 minutes से 100 second मतलब near about one more than 1.6 1.6 minutes it will take. So paper it will take 5 seconds. So here we can say that the productivity of paper, that is 10/2, means in per 5 second we will get a paper. But in case of the magazine, we shall get a magazine in near about 1.6 minutes. So the productivity of machine, if we assume that the productivity level number of pages published per second per unit time in paper is high in comparison number of magazine unit published per unit time. So productivity is the rate of the output per unit of effort, or the output achieved with regard to the time but irrespective of the cost incurred. So hence there are two issues for deciding the unit of measure. होता है the quantity of output और दूसरा है the period of time. So if the in software, one of the measure for quantity of output is line of code produced and time is measured in days or month. जैसे कि हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वैसे तो हर प्रोग्राम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन हम लोग जब उसमें जनरली बात करें तो हम अपने प्रोजेक्ट की लेंथ को एक क्राइटेरिया लेते हैं, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ कोड्स आर इन द software. If in general it is assumed that the more the number of lines, the more complex the software will be.
but it is general assumption. It is not always happens like this. It is quite possible कि एक छोटा program हो, complexity high हो, and the larger program is a simple one. So this is not the only criteria, but it is one of the criteria that the number of line is taken to the find out measure the quantity of outputs. सपोज कोई कंपनी मॉनिटर करते हैं कि हमारे अगर एक प्रोग्रामर है उसको इतना एटलीस्ट इतने लाइन ऑफ कोड इतना आउटपुट उसको पर डे देना चाहिए, तो ये कंसीडर होता है. लेकिन अगर टफ प्रोग्राम है तो डेफिनेटली इफ प्रोग्रामर गेट स्टक एट सम पॉइंट ही वुड नॉट राइट any running not many lines of codes on that day, because he will think about it. So it does not mean that you can only check the find out the productivity with help of measure the productivity is not only criteria on basis of which you measure the process or the effort of the somebody, but it is one of the criteria. And period of time. Here the most appropriate unit of effort is person per month, meaning thereby number of person involved for a specified month. So productivity may be measured as LOC per month. So अगर आप per month is a person per month, तो पर्सन्स मंथ. तो अगर कोई एक इंसान एक प्रोजेक्ट कोड के ऊपर लगा हुआ है तो उसके हम निकाल देते 5 लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जितनी लाइंस बनी होगी तो उस पे 5 लोगों ने एक महीने तक में जितनी लाइन बनाई वो होगा पर लाइन ऑफ कोड पर मंथ. तो पर्सन मंथ्स होगा, तो लाइन ऑफ कोड पर मंथ. तो ये आपका पता चला जाएगा कि उसमें कितना एफर्ट किया जा रहा है. तो जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतना पर्सन पर मंथ कम होता चला जाएगा. बट कंपनी में ये होता है कि उसको ज़्यादा दिखा देते हैं और दिखा के वो बोलते हैं कि अगर हमारी लाइन ऑफ बड़ा प्रोजेक्ट है, नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा है, तो दे एश्योर दैट द मिनिमम नंबर ऑफ काउंट को वहाँ पे एश्योर किया जाए. ठीक है, तो कंपनी में ऐसा भी होता है. एंड मॉड्यूल एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. So there are many definitions of the term of module. They range from a module is a Fortran subroutine to a module in ADA package to a procedure and function of Pascal and C. तो मॉड्यूल होता है आपका क्या, मॉड्यूल आपका डेफिनेशन ये होती है कि an independently derivable piece of functionality providing access to its service through interface. मतलब इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड्स होते हैं जो कि एक इंटरफेस के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मतलब ये आपस में एक इंडिपेंडेंट होंगे लेकिन वो थ्रू एन इंटरफेस क्या करेंगे, कोड होंगे. एक चंक ऑफ कोड्स होता है जो कि आप खुद में काफी इंडिपेंडेंट होता है और आप उसकी सर्विस को लेने के लिए आप यू नीड अ इंटरफेस टू इंटरैक्ट विथ दिस सेगमेंट ऑफ कोड. So ये कह सकते हैं कि a component represents a modular, deployable and replaceable part of system that encapsulate implementation and expose a set of interface. तो a component अगर वो modular है तो उसको डिप्लॉय करना में और वो रिप्लेसेबल भी होता है. सपोज एक मॉड्यूल में कोई एरर आ गई तो इट इज इजी दैट वी replace the module. We only need to modify that module और हमें बाकी मॉड्यूल के ऊपर भी कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं. तो इससे कई एडवांटेज होते हैं कि इसमें हम लोग अगर एक मॉड्यूल के सेगमेंट पे एरर है तो वी नीड ओनली टू करेक्ट दैट पोर्शन इंस्टेड ऑफ रेक्टिफाइंग ऑल द मॉड्यूल्स. तो एक तो इंडिपेंडेंट होता है, उसके बाद ये डिप्लॉयबल भी होते हैं. Suppose one module is independent and in another project you want the same functionality, then you can use with that module as a whole or with a little bit of modification in another product or product, and this is called deployable and they can be easily deployed and they are replaceable also. Suppose you want to once replace or upgrade some portion of the code, then you will
replace that code, that module which have this module code line of codes, uh, and in this way modular way of designing is in computer science is very common in almost all the language like Fortran, Ada, Pascal, C++, Java. They use the concept modular concept with different name. As in Java, we call these Java packages. In Pascal's and Pascal, we call this procedures. In C, we call this function. And in Ada, we call this package. And in Fortran language, we call this as subroutine. So it is a reusable component, is an independent, deployable, and replaceable software unit that is usable by a third party based on the unit specification, implementation, and well-defined contracted interface. तो अगर आपका कोई आपने एक इंटेंट की प्रोजेक्ट के लिए बनाया है तो ये भी पॉसिबल है कि वो कुछ समय बाद आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के रेफरेंस को प्रॉपर डिफाइन आपने उसको यूज करना पड़ेगा, आप उसको दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन पे ध्यान भी देना होगा कि सारी चीजें एज इट इज में रन नहीं करती। तो ये हो गया मॉड्यूल एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो अभी मैंने बताया मॉड्यूल क्या है। एक आपका यूजेबल मॉड्यूल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, डिलीवरेबल पार्ट दैट इनकैप्सुलेट अ फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, एक पर्टिकुलर फंक्शन से जुड़े हुए स्पेसिफिकेशन को यूज करता है और वो इम्प्लीमेंटेड फॉर रीयूज बाय थर्ड पार्टी। हम इसको इसीलिए बनाते हैं कि उस मॉड्यूल को करने के बाद अगर हम कहीं इंस्टॉल करें तो वो उसके अंदर कुछ अपडेट कर सके, मॉडिफाई कर सके, क्योंकि समय के साथ सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें बदलती हैं तो हम उसके अंदर ये चीज़ें कर सकते हैं। और UML लैंग्वेज जो होती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंगली a component represents a modular, deployable, and replaceable part of the system that encapsulate implementation and expose a set of interface। तो ये सभी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द आउटपुट और प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो हम होता है इसको दो तरह से मापते हैं, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड पीरियड ऑफ टाइम्स। अभी मैंने बताया था आपको दो इश्यूज हैं इसके। और इस क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं लाइन ऑफ कोड में। तो इट इज़ मेजर्ड इन डेज और मंथ्स। एंड जो दूसरा तरीका है वो है आपका पर्सन पर मंथ के लिए मेजर करना, और मीनिंग देयर बाय नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व फॉर स्पेसिफाइड मंथ। सो प्रोडक्टिविटी में भी मेजर्ड, LOC पर मंथ में भी मेजर कर सकते हैं। और हम लोग ये जो होता है प्रोडक्टिविटी को हम लोग प्रोडक्टिविटी को लाइन ऑफ कोड के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं, लाइन ऑफ कोड पर मंथ के टर्म पर भी मेजर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, इसके पहले था। सॉफ्टवेयर मैट्रिक क्या है, आपका जो सॉफ्टवेयर मेजरमेंट होते हैं और जो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स को मैंने बोला था, जो मॉड्यूल्स हैं उनके इंडिविजुअल मेजर्स को हम लोग इसी तरह आपस में रिलेट करके उससे डिराइव्ड इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, तो वो क्या होता है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स हो जाता है। तो मैट्रिक्स की जब बात करें तो मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स और प्रोसेस मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं आपके साइज, रिलायबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शनैलिटी। और प्रोसेस मैट्रिक्स जो होते हैं वो आपके होते हैं प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड फेल्योर रेट और एफिशिएंसी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको बेस पर मैंने देखा है। तो ये हो गया। अब एक, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू।